Okay, let us begin. EV technology, EV technology being encouraged by the government in various ways by giving subsidies on the production and by also helping the companies to encourage the users to use it has various pros and cons. Let us discuss the pros and cons in details. Okay, so the electric vehicle, the scene is a very recent, not very recent, you can say, but it is a very necessary step towards the sustainability because, as we all know, the petrol or the uh, diesel-run vehicles are not going to stay here for long because it is not renewable. Eventually, this is going to run out whether we want it or not. So electric vehicle technology is not something that is optional, but is inevitable. So the sooner we adopt it, the faster, the better it is. And yeah, I Yes, think the but pace at which, सबसे पहले yeah, तो continue. ईवी टेक्नोलॉजी या ईवी टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा, जो कि इस समय ग्लोबल कंसर्न है। एज वी नो दैट 2023 में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर हम लोग ईवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो पॉल्यूशन पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा कि वो रिड्यूस होगा। सेकेंड थिंग इज कि जैसे ये है तो इनके लिए बैटरी स्टेशंस बनाए जाएंगे, बैटरी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो जो इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये जैसे स्टेशंस बनाने हैं तो इनके लिए जो जगह चाहिए होगी, तो इससे जो लोग रियल इस्टेट से भी जुड़े हुए हैं उनको भी इससे फायदा होगा। प्लस वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जैसे वहाँ पे अगर इंडस्ट्री बनाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट भी वहाँ पर आएगी। तो इन सब चीज़ों से मार्केट में भी डेवलपमेंट होगा और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। I यस, think EV साक्षी के पॉइंट्स पे technology मैं is कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। जैसा कि साक्षी ने बताया कि कहीं ना कहीं एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और ऋतिक ने जैसा बोला कि एक रिप्लेसमेंट है पेट्रोल का। कहीं ना कहीं अगर हम ईवी का अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाएगी, जहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल का जो यूजेज है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा इन्फ्लेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और इकोनॉमी में भी एक बूस्ट देंगे, क्योंकि ना कहीं क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन में या हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने में, उसके प्राइसेस। यस बट यस uh, मुझे लगता यस है कि बट जो जैसे कि हम इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे ज्यादा इस वजह से है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं। और इसमें क्या, इसमें और दूसरी चीज क्या है कि जो भी वेस्ट एशिया है वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि अभी भी यूक्रेन उसका पैलेस्टीन और इसराइल का युद्ध चल रहा है। तो वेस्ट इजराइल। एशिया में जो कंट्री है, इसराइल का जो वेस्ट वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गई, इराक हो गया, तो ये जो होती है मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है। तो अगर वहां पे अगर कुछ भी होता है तो जो ऑयल जो होता है, ऑयल जो वो यहाँ तक अच्छे से मिल नहीं पाए आ नहीं पाएगा। तो इससे एक चीज और होती है कि जो जब ऑयल की प्राइस बढ़ता है तो तो जो कमोडिटीज है वो सीधे लिंक होती है ऑयल से, तो उनकी भी जो प्राइस है वो कहीं की बढ़ते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि वहाँ पे एक गल्फ ऑफ ओमान भी है। वहां से हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना ऑयल जाता है उसका 1/4 ऑफ ऑयल जो है वो वहीं से जो चौक पॉइंट है वहां से होकर जाता है। अगर वेस्ट एशिया में कुछ होता है तो वो ऑयल जो है पूरे वर्ल्ड में सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अगर ऑयल अगर सही से सप्लाई नहीं हो पाएगा तो हम देखेंगे कि सभी जितने भी जो प्रॉब्लम्स है कमोडिटीज बढ़ना, वो सब भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो इससे कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो वो भी कम होगा। और दूसरी चीज क्या है कि इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है, जब भी कोई युद्ध होता है बाहर के देशों में तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं वोलेटाइल होता है। और इससे क्या होता है कि जो कुछ लोग पैसे कमाते हैं और कुछ लोग बनाते हैं, तो इससे स्टेबल नहीं होता। तो मुझे लगता है ये मेजर सेटबैक होता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो इंडिया का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो इसमें और कोई ऐड करना चाहे Continuing तो। further, यस Continuing बट further, यस it will also help बट the country to achieve its sustainable development goals and will contribute to the further economic development of the country by providing various benefits. Moreover, there was a recent news that the Ola electric vehicle manufacturing company has recently received a production link initiative from the government for the 15 that varies from 15,000 to 18,000 per unit that is being manufactured. These all initiatives are being taken by the government in order to encourage the use of EVs. And recently in Chandigarh also,
there is a ban on the registration of new petroleum vehicles that are being purchased because the targets are being set by the government. And if once the targets are met for the yearly basis, the new then you can purchase only the electric vehicles. No petroleum vehicles are being allowed to be purchased. Yes, I everything is agree correct, with but I I want to highlight I want to highlight some environmental issues that are related to EVs. Like EVs mostly are currently depend upon lithium-ion batteries, and we all know that lithium ore is limited in this world. So we have to move to different alternatives, or we have to make it more work on its reusability, or and also some safety problems are also there with lithium, like it is highly flammable, and we have seen uh, many scooters, like many company scooter burning issue in recent times. Yes, there are limitations and there is still infrastructural development that needs to be done. Sure about that. Also, India being the second largest populous country in the world. Yes, no, just 1 minute. India being the second largest populous country in the world. So, if we do advancement in the AV industry, we can surely contribute a lot to the world. And for that, even if we are not able to come up with a technology, we can sure with Make in India initiative welcome a lot of advanced companies like Tesla and any other companies, which can, of course, as mentioned by you, is great for job creation. So yes, with as it also goes in line with the net zero carbon by 2070 of India's, that is a goal. So I think it ticks a lot of boxes in one shot. I agree with you, as the development can lead to growth in stock market, and which will eventually lead to the boost in the economy. And we as banks can also invest in this stock market. So it is very crucial for our economic development and enhancement and innovation and technology, uh, and in also automotive industries. Mhm. So, being talking about the pros, but there are also some challenges that we have with us. Currently, the talk about the infrastructure. As we know, if we go a few kilometers out of the major cities, there is a serious lack of EV infrastructure because all the charging ports, all the stations, and all the technologies, or the even the repair shops that are available for EV vehicles are all stationed around the major cities. So for anyone outside that, which is the major population of India, buying an EV is not at all like what we can say uh, an idealistic choice, because for everything they would have to get access to the major cities, and also the initial cost is very high. Like when you go to buy an EV vehicle, usually people say that don't worry, the break even will eventually take place. But for that, a person has to drive for thousands of, I am not sure about the exact data, but for in order to had she bought a petrol or a diesel vehicle, or instead of that he bought an EV, the break even time is a lot. So yes, there are a lot of issues like that. इसी के साथ साथ जो Moreover, the ईवी का speed जो issue. बैटरी बैकअप है, वो भी कहीं ना कहीं उतना ज्यादा नहीं है जितना हम डेवलप कंट्रीज में देख रहे हैं। Hmm. इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, और जैसा कि आपने बताया कि काफी एक्सपेंसिव भी पड़ता है, और कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में भी अभी एक ये मतलब एक डाउट रहता है कि कहीं ना क्या हमको ईवी लेने से हमको बेनिफिट होगा पेट्रोल की व्हीकल लेने के बजाय। तो ये लिमिटेशन तो है ईवी में। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं कोयल से बनती है, कोयले से। वो कोयला जितना ज्यादा बनेगा इतने हमारा जो जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होगा। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। और दूसरी चीज क्या है, जो चाइना है हमारा, जो लिथियम है, लिथियम ज्यादातर जो चाइना में है। अगर हम ईवी टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ाते हैं, नेगेटिव की बात करूँ तो लिथियम, और जो हमें लिथियम है वो ज्यादातर चाइना से मंगाना पड़ेगा। और चाइना हमारा जो है मित्र मुल्क तो नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ऐड करना चाहे तो। Yes, but it is Moreover, a temporary thing, as we have found many lithium reserves in India,
and we are moving forward to harness that lithium ion ore. Yes, we surely Moreover, if have. we go to the hilly areas, the speed of the electric vehicles is very less as compared to the speed of other vehicles. We are not able to drive as much at, at the same pace as we are able to drive other vehicles. This is the main problem that the people are facing in the hilly areas. Moreover, the technology that we see is not up to the requirement of the population. In the normal vehicles, we can drive like 100 140 easily, but in the as come in ev vehicles the speed is not that much. Anyone has anything to Yes, add to I this? agree with Jatin. Yes, please. ईवी व्हीकल्स में स्पीड की भी प्रॉब्लम है, उसमें बैटरी पावर जो है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इन विंटर सीजन हम लोग विंटर सीजन में भी अगर कभी ईवी को यूज़ करना चाहें तो वो इतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए ईवी को अडॉप्ट करते टाइम। Or अभी we हाल ही can में move towards the hydrogen fuel cell batteries that will be more efficient. But yes, technology is still developing phase, so we can move forward to that field also. The repair and अभी maintenance अभी cost of ev vehicles is also very much high as compared to other vehicles. When we compare the cost of both the vehicles, we will see that the repair cost is too much in case of ev. Yes. Anyone like to add anything? Okay, so I think we can conclude with this. EV still has a lot of technological barriers to cross, and definitely there are certain challenges and there are certain limitations for which we cannot say for now that it will completely or in a certain way replace the petrol or the diesel vehicles. But still, the development that is being done in the EV sector is really fast. Just like AI, it has limitations, but it is moving forward very fast. And surely and certainly, at one point, it will be the ideal choice of all the people around the world. So, with this, I conclude this group discussion. Thank you.